Hello everyone. In this video, I'm going to talk about my personal experience and I'm going to talk about all the interview questions which were asked at Vedantu. So in the previous video, I have already told you if you want to apply as a master teacher or as a class teacher at Vedantu platform, how you can apply for that. And in this video, we are going to discuss the interview questions which Vedantu usually asks to the candidates. So, without wasting time, let's start the video. Now, the first question which they usually ask is introduce yourself. Now, I know this is a very basic question, and if you apply, anywhere, the first question which is asked to you is introduce yourself. So, talking about the introduction, I know most of you have this idea that how you are going to introduce yourself, but I would say that when it comes to your introduction, so basically just don't start like I did my 10th from here, I did my 12th from here, and then I did my graduation, and then I did this. No, just start from the point where you are just now. So when you are asked to give your introduction, just start from the point where you are. For example, I'm an English professor, I'm teaching English, so how I can give my introduction is I'm Cheshta Madan and I am an English professor working in so and so college, and I am teaching students of BA honors, MA. Then you can just go back into your past and say that okay, I did my 10th from here and I scored this much marks, I did my 12th from here, and then they basically ask you to talk about your achievements. So what you would say is that, for example, like I said, is I'm a member of Women and Legal Literacy Cell, and I'm also a member of NAC, and so these were the basic achievements, right? So in this way you can introduce yourself. Then talking about your educational background, you already said so. Then they also ask you to talk about your family background, so you will say that okay, my mother is this and she is a housewife or she is working here, then my father is this and I have a brother or a sister who is this. So this is all about your introduction. So I hope this is clear to you. Now, talking about the second question which they ask is why do you want to teach at Vedantu? Why do you want to teach at our platform? So आई नो कि हर किसी का आंसर अपना सेपरेट होगा कि वाई डू दे वॉन्ट टू टीच एट वेदांतु. मे बी सम ऑफ यू मे हैव रीजन दैट यू वॉन्ट योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, and maybe some of you just want to explore yourself. ठीक है, so whatever you have your reasons, you can just list it out here that what do you want to be a part of Vedantu. Or you can say that कि आपकी जो organization है, it's so reputed that I want to be a part of this organization and I want to explore myself on this digital platform so that I get to know a lot of students, and I can teach at this platform so that I can learn more. So इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ वेदांतु. देन third question which they asked was what quality do you have as a teacher. Now everyone has different qualities. Now if you are a teacher, obviously you must be having different sort of qualities. Like some teachers have different methods of teaching. Like what I said was, what quality do I have as a teacher? Basically, I like to finish my work on time. I'm a diligent and a serious teacher who likes to finish her lessons on time so that students get maximum benefits out of it. And then I can handle all sorts of all sorts of, you can say, all sorts of doubts which student have. And moreover, I like to finish my lessons on time, and I give multiple revisions to children which they like so that they can revise their lessons multiple times. So you can list out various qualities which you have as a teacher. Then
बेसिकली दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड कि आप जो है एक वन वर्ड में डिस्क्राइब करो कि व्हाट क्वालिटी डू यू हैव एज अ टीचर. सो वन वर्ड फॉर दिस can be whatever you feel like. I can just give you an example. For example, you can say I'm industrious, I'm hardworking, I'm diligent, or I finish my lessons on, you can say, time. So एक लाइन में या एक वर्ड में आपको इसका आंसर देना होता है. नेक्स्ट, now you know, as I applied for the role of an English teacher, एंड ये क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछा जाता है इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द रोल ऑफ एन इंग्लिश टीचर, बिकॉज इन इंग्लिश सेक्शन यू नो वी हैव वेरियस पार्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव रीडिंग पोर्शन, वी हैव राइटिंग पोर्शन, वी हैव ग्रामेटिकल पोर्शन, वी हैव लिटरेचर पोर्शन. सो हर पोर्शन में से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग पोर्शन में मैं बात करूँ तो जब हम कॉम्प्रीहेंशंस करते हैं तो कॉम्प्रीहेंशंस में बेसिकली जो कॉम्प्रीहेंशंस हैं उनमें कोई साइंस का टॉपिक भी आ सकता है, कोई सोशल स्टडीज़ का टॉपिक भी आ सकता है. सो सभी सब्जेक्ट्स से जो है कोई भी टॉपिक लिया जा सकता है और आपको एक कॉम्प्रीहेंशन दिया जाता है, राइट. सो दिस वाज द क्वेश्चन दैट इफ़ यू गेट अ क्वेश्चन ऑफ साइंस और सोशल स्टडीज़ इन कॉम्प्रीहेंशन, हाउ विल यू डील विद दैट. सो now I guess some of you know that I did my BTech in electronics communication, and then I did my masters in English and then B.Ed. So I have knowledge of science and social studies as well, and I can teach science and social studies as well. So my answer to this question was I don't have a problem if I get a comprehension dealing with a science topic or a social studies topic. I'll be comfortable explaining that to a student because I have knowledge of these subjects. Now if you don't have knowledge of these subjects, don't worry about that. You get time to prepare your lessons in advance, so you can say that although I'm not skilled in science or social studies, but yes, I will prepare myself well before the classes, before the sessions, so that my students are comfortable with the sessions. So इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ठीक है. अब ये तो हो गया रीडिंग सेक्शन से क्वेश्चन, राइट. एक क्वेश्चन पूछा गया था ग्रामेटिकल पोर्शन से. सी आपका जो टेस्ट लिया जाता है वेदांतु पे, जब आप अपना CV अपलोड करते हो उसके बाद जो आपका टेस्ट होता है, तो ग्रामेटिकल पोर्शन से बेसिकली इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता. देन कम्स द राइटिंग सेक्शन. ओके, राइटिंग सेक्शन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था विच आई विल कवर. एंड देन कम्स द लिटरेचर पोर्शन. तो लिटरेचर और राइटिंग सेक्शन का जो क्वेश्चन था वो एक ही क्वेश्चन था, एंड दैट वाज हाउ विल यू हेल्प स्टूडेंट्स विद आंसर राइटिंग, ठीक है. तो ये लास्ट क्वेश्चन था, हाउ विल यू हेल्प स्टूडेंट्स विद आंसर राइटिंग. तो बेसिकली जब हम राइटिंग पोर्शन की बात करते हैं और लिटरेचर पोर्शन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन कवर कर लेता है उन दोनों सेक्शंस को. So what I said was कि answer writing is the basic technique, you know, because it doesn't matter that how much you know, it doesn't matter how much you have in your head or your brain, but वो मैटर करता है कि आप अपनी शीट्स पे कैसे उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो. योर रिप्रेजेंटेशन, योर राइटिंग मैटर्स. आप अपने आंसर को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, बिकॉज यू नीड टू बी प्रेजेंटेबल. चाहे आप इंग्लिश की बात करो या सोशल स्टडीज़ की बात करो, आपके आंसर्स प्रेजेंटेबल होने चाहिए. When it comes to literature section, so I said how will I help the students with answer writing is that I will teach them that in a particular chapter we have a vocabulary which needs to be grasped, which needs to be learned, so that जब भी आपके पास कोई आंसर आए यू कैन फिट दैट वोकेबुलरी इन दोज आंसर्स. अगर सपोज आप एक चैप्टर पढ़ते हो लिटरेचर का, तो उसके अंदर से जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट वोकेबुलरी पार्ट है, यू शुड हैव दैट इन योर माइंड, सो दैट आप एक आंसर जब लिखो आप उसको लिख सको. तो ऐसा तो नहीं है ना आपने एक लिटरेचर का चैप्टर पढ़ा, आपने कहानी पढ़ी, आप लिख दोगे, नहीं. बेसिकली वॉट यू नीड टू नो इज़ कि उसमें इम्पॉर्टेंट क्या था, उसमें क्या वोकेबुलरी वर्ड्स मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने आंसर को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए. और उसके साथ साथ अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिलते हैं तो यू नीड टू मेक हेडलाइंस ऑफ दैट क्वेश्चन, और उसके बाद अपने आंसर्स को लिखना शुरू करो. क्योंकि जब एक एग्जामिनर आपके क्वेश्चंस को मार्क करता है तो वो वहीं से समझ जाता है कि अच्छा उसे हेडलाइन पता है बच्चे को, तो जो अंदर का मैटर होगा दैट विल बी अ सूटेबल वन, दैट विल बी दैट वन जो उसमें फिट हो रहा है, राइट. तो हाउ विल यू हेल्प स्टूडेंट्स विद आंसर राइटिंग इज आई विल टीच देम
that whenever you go through a lesson of a literature section, you need to revise, you need to go through the vocabulary, you need to, learn and memorize all those important points, because I guess you have 5 or 6 important points in a lesson and you need to grasp them. And then when you're writing an answer, you need to fit those, you need to mark those, you need to underline those so that it looks presentable. So in this way, I'm going to help students with the answer writing section, and I'll explain him or him or her that answer writing is the basic or the fundamental technique of the literature section or the writing section. So these were the interview questions which were asked at Vedantu, and if you are applying for the post of an English teacher at Vedantu, all the best to you, and I hope ये वीडियो आपको हेल्प करे. इन केस यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन ड्रॉप डाउन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल श्योरली एड्रेस दोज डाउट्स. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर किसी और को जो है इस वीडियो की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को उसके साथ शेयर करना. एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.